it tells us that the activation energy for this reaction is so low that the rate of the reaction is quite high. So this data tells you the impact that the ligand at the trans position to the leaving group has. That as you change the nature of the ligand, which is trans to the leaving group, which is chloride. Uh, Imagine if you have a dichloro complex, chloride leaving group, and at the trans position also chloride, the rate of reaction is quite slow. 1 into 10 raised per minus 6 and 4 into 10 raised per minus 4. And the moment you replace the chloride by hydride, the rate of reaction increases almost 10 raised power 6 times to 10 raised power 4 times. So huge increase in the rate of reaction by changing the nature of the trans ligand. So this is the magnitude of the impact of the ligand, which has nothing to do with the substitution. It's only positioned at the transposition with respect to the leaving group. So allowing for the difference in the temperature. Why temperature, different temperatures have been used, as I told you that the first reaction is very fast. Varying the trans ligand can change the speed of the replacement or speed of the reaction over a range of 10 raised power 6. So there is 1 million times roughly increase or decrease in the rate of reaction by just changing the ligand at the trans position to the leaving group. The order of the this is known as, I have written liberalization, this is labelization. Labelization. Labelization means making somebody more reactive. So the trans ligand is hydride is making, as I should say, hydride is making chloride very reactive towards substitution reaction, whereas chloride at the transposition is making its co-brother chloride very unreactive towards substitution reaction. Or hydride is making chloride more reactive, more labile, and methyl anion is making it somewhat less reactive towards substitution reaction. So this is the ordering of the translabelization is not precisely same for every substrate. So this is one substrate when you have platinum at the center metal, the other ligands, spectator ligands, or triethylphosphine. The moment you change this triethylphosphine by somebody else, the rate of the reaction may not be same, and the order also may somewhat change slightly, made the same for so it depends on the substrate. However, a sort of average order is the average order that is observed in numerous reactions is that when cyanide or carbonyl or ethylene are at the transposition, rate of reaction is huge. These three ligands increase the reactivity of the reactivity of the complex towards the substitution reaction by exceptionally high rate. So they are labelizing, they are strongest ligand in this what we call trans-directing trans effect series. So then is trialkyl phosphines and hydride, they are almost now second in number. Then is methyl anion and thiourea. This is NH2, not NH3. This is thiourea. Then phenyl, much larger than the phenyl anion and nitro group. Then iodide. These three are also at par among themselves. And then thiocyanate also. Then bromide. Iodide is much better trans-directing ligand or labelizing ligand. Then bromide better than chloride. Then pyridine, then ammonia, and then water and OH negative. So what are some books will write water ahead of OH, some will write OH ahead of the water. The tendency of an already attached group to direct the incoming ligand to its transposition in the ligand displacement reaction in a square planar complex is called trans. So this is another way of saying same thing. There are two things attached. One is the trans directing influence, that if you have two options, which particular ligand is substituted, that ligand which is trans to a more ligand which is higher in this series, and the ligand which is trans to this to the ligand which is higher in this series will be substituted. Such groups are called labelizing ligands or trans-directing ligands.
So the trans effect may also be defined as labelization of the ligand trans to the other trans-directing ligand. The trans-directing ligands are also called spectator ligands, as they are neither the entering group nor are the leaving group, yet they affect or have an impact on the rate of the substitution reactions in the square planar complexes. So there are two aspects to the trans effect that must be identified. One is the kinetic effect, or simply trans effect, kinetic trans effect. This simply, is concerned with the rate of the reaction. As I said in the last slide, we gave the data that how the rate of the reactions K1 and K2 vary with the change in the nature of the trans ligand. So this is the kinetic effect. The kinetic trans effect in square planar complexes is the phenomena in which certain ligands increase the rate of substitution reaction and certain ligands decrease it. As this effect deals with the rate only, it must not be confused with the trans influence. Trans influence means which particular ligand is displaced if you have two options. That is trans influence, uh, uh, which involves the weakening of the trans bonds, and hence it is thermodynamic in nature. If Y is entering ligand and T1 and T2, or if Y is entering ligand, T1 and T2 are two different. Uh, uh, yes, this is two complexes in which A and A are same. X is the leaving group. T1 is trans ligand in one complex. There is another ligand a complex in which three ligands are same. That is, two ligands A and A are same. X is same, but the trans ligand is different here. And if the rate of this reaction is fast, or anyway, if the K2 is much larger than K1, that means that T2 has higher trans effect, kinetic trans effect than T1. That means that T is labelizing effect of the impact of the T2 is much greater than the T1. It also means that the T2 increases the rate of substitution reaction in this complex by a huge amount than what the T1 is able to do with the other complex. Remember, in both reactions, the entering group is same, the leaving group is same, but the identity of the ligand, which is trans to the leaving group, is different, right? So if K1 and K2 are observed rate constant, the X is the leaving group, the process can be depicted. If K2 is much larger than K1, T2 ligand is higher, having greater trans effect strength than the T1. Or in other words, T2 has much larger labelizing effect, makes the complex more labile. T2 makes complex more labile than the T1. This is known as the trans effect, kinetic trans effect, or simply trans effect. The other thing is known as is thermodynamic trans effect, or it is also said some books as trans influence. The thermodynamic trans effect or the trans influence may be defined as impact of ligand on the length of the bonds trans to it. So it talks about the first, the kinetic part of the trans effect talks about the rate of reaction. And the rate of reaction depends upon the activation energy. Obviously, that particular reaction which has lower activation energy will have higher rate, and higher rates are uh, larger rates of the reactions are made in terms of the numeric magnitude of the observed rate constant. So if K has large values, that means that rate of the reaction is fast, that reaction is happening fast, and also that activation energy is low. And on the other hand, if a reaction has the observed rate constant is low, has less numeric value, that means that reaction is slow. It also means the activation energy for that reaction is quite high. So thermodynamic transfer or influence may be defined as impact of ligand on the length of the trans bond in the ground state of a square planar complex. Like trans effect, the trans influence is also independent of the metal ion but depends on the geometry around the metal center. So here is an example. Again, you have two complexes having both A same, X same, leaving group is same, but the ligand which is trans to the leaving group is different. So this PX bond, the
length of the bond between platinum and the leaving group is shorter here, and it is longer in the case of the other complex. That means that the stability of the px bond is much better in the first complex as compared to stability of the px bond in the second complex. In other words, px bond is weaker in the second complex. It is stronger in the first complex. In other words, the bond breaking of the px is easy in the second. It is difficult in the first complex. So elongation of the trans bond is done more profoundly by T2 rather than T1. So it's the ground state is much unstable. In the case of second case, it is more stable in the case of the first case, which indicates that thermodynamically the trans-spectral transference of T2 is higher than the T1. So here are examples. Say for example, you have chloride, and ammonia. So chloride is the leaving group in a substitution reaction. You can see you have chloride and the trans bond is chloride. You have ammonia, its trans bond is chloride. Uh, Platinum chloride bond, which is trans to ammonia, is much shorter and much stronger than platinum chloride bond, which is trans to chloride. What does it mean? It means that chloride has more trans influence than ammonia, because ammonia is not able to make the trans bond more unstable than what the chloride is able to do. Otherwise, this is also platinum chloride bond, this is also platinum chloride bond, but this bond is of different length. This is shorter bond, this is longer bond. So substitution will take place at this position. So you will have substitution taking place of this chloride, not of this chloride. Similarly, go to this complex. So you have bromide and ammonia. Bromide, which is trans to the bromide, is 270 picometer, and bromide, which is trans to the ammonia, is 242 picometer. So huge difference. It does the magnitude of the bond. The difference tells us that bromide is much better trans-directing agent than chloride. So chloride was not making huge difference between the two platinum chloride bonds. Bromide is making huge difference. One is 242 picometer, other is 270 picometer. So this particular bromide will be preferentially substituted. So bromide is directing the incoming group at this position rather than the ammonia is not able to direct it to this position. So the new entering group will be directing trans to this bromide, not this cis with respect to this bromide. So trans influence of bromide is higher than the trans influence of ammonia, right? Say the last example, as I said in this series, if you remember this series, the ethylene was at the top position. So this is then the example ethylene. This is platinum linked with three chloride groups, and then one position is occupied by coordination side by the ethylene, which is a pi complex. The pi bond of the ethylene is involved in the involved in the coordination with the metal to the metal ion. So this chloride, uh, we have ethylene. Trans to it is chloride, that is 242 picometer, and you have chloride and trans to it is another chloride, that is 232 picometer. So among ethylene and chloride, ethylene is more powerful. It is lengthening the bond of the platinum chloride trans to it by 242 picometers, making it 242 picometers longer bond as compared to the platinum chloride bond, which is trans to the platinum chloride bond. So trans influence of ethylene is much higher than that of the chloride. So these are the examples what we mean by thermodynamic nature trans influence, that you can predict which particular ligand will be displaced, right? If you do the reaction of this complex with pyridine, you have three chlorides. You can predict which particular chloride will be displaced. It will be this one which will be displaced. You will have a trans complex. Pyridine will go here,
and ethylene will be trans to the pyridine. So two chloride which will be in the product, they will be at the trans position with respect to each other. So you will have a trans isomer. So you can systematically synthesize a desired isomer in the platinum chemistry, knowing the fully understanding the trans influence. So trans influence of ethylene is higher, right? So another experimental evidence of the trans influence, thermodynamic trans influence, how the bond, strength and bond length are influenced by the identity of a ligand at the trans position. We saw in the previous case that this platinum chloride bond is longer and weaker, and this particular platinum chloride bond is shorter and stronger. And this longer bond and weaker bond is formed because there is a group at the trans position called series, right? Is that you take a complex which is platinum A2L dash and H. You have L is equal to trithylphosphine again, and L is different ligands at transposition to the platinum hydrogen bond, platinum hydride bond, and you record this stretching frequency of the IR. I hope you know the IR spectroscopy. थोड़ा पढ़ा है ना? Hello? Yes, sir. थोड़ा Yes, पढ़ा sir. है ना IR थोड़ा सा? Yes, sir. अभी भी पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर में? पढ़ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड पे, राइट? लेंथ ऑफ द बॉन्ड पे और स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितनी बॉन्ड छोटी होगी और स्ट्रॉन्गर होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ही हायर होगी, और जितनी बॉन्ड लंबी हो जाएगी और वीकर हो जाएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो प्लेटिनम हाइड्राइड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करा गया कि डिफरेंट, जब एल डिफरेंट, अगर एल साइनाइड है जो कि बड़े हाई पोजीशन पे है ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में, देखिए साइनाइड टॉप पोजीशन पे है। जब साइनाइड था एल, तो उस टाइम जो ट्रांस बॉन्ड होगी प्लेटिनम हाइड्राइड की वो वीक होगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 2041 सेंटीमीटर इनवर्स है। जो ही थायसाइनाइड जो कि वीकर है इससे वो डाला गया तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, यानी प्लेटिनम हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गई और छोटी हो गई। नाइट्रो ग्रुप डाला गया और स्ट्रॉन्गर हो गया प्लेटिनम हाइड्रोजन बॉन्ड। आयोडाइड डाल दिया 5156, ब्रोमाइड डाल दिया 5178, क्लोराइड डाल दिया। सो जो जो आप वीकर ग्रुप डाल रहे हैं ट्रांसपोजिशन पे, तो प्लेटिनम हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्टर हो रही है और स्ट्रॉन्गर हो रही है। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इंक्रीज इन द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ रही है? बात इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है। No, sir. वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से जितना बॉन्ड शॉर्टर होगा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, उतना ही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हायर होगा। जितनी बॉन्ड लंबी हो जाएगी उतने ही बॉन्ड वीकर हो जाएगी और उतनी ही उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नेगेटिव साइड शिफ्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है जो दर्शाता है, जो एक एक्सपेरिमेंटल सबूत है कि भाई जब आप ट्रांसपोजिशन पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड को रखते हो तो आपका जो हाइड्राइड का प्लेटिनम हाइड्राइड का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नीचे गिर जाती है, कम हो जाती है। जो जो आप वीकर ग्रुप डालते हो वहां पे आपके प्लेटिनम हाइड्रोजन हाइड्राइड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप ट्रांसपोजिशन पे डालेंगे उतना ही प्लेटिनम हाइड्रोजन बॉन्ड लंबी हो जाएगी तो वीकर हो जाएगी तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, राइट? और वाइस वर्सा, जितना आप वीकर ग्रुप डालेंगे प्लेटिनम हाइड्रोजन बॉन्ड छोटी हो जाएगी तो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी तो उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि आप दो कॉम्प्लेक्सेस ले रहे हैं, टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट और टेट्रा अमीन प्लेटिनम 2+, तो इसमें अमोनिया डाल दीजिए। तो पहला अमोनिया जो है कहीं भी जा सकता है, सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो ये चला गया यहाँ पे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रांस इफेक्ट वहां पे ऑपरेट करेगा। अब आपके पास दोबारा क्लोराइड सब चले जाना है। क्लोराइड इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो अब
दो ऑप्शंस है कि क्या क्लोराइड जो अमोनिया के अपोजिट है वो जाएगा, या क्लोराइड जो क्लोराइड के अपोजिट वो जाएगा। और ये देखा गया कि हमेशा जो क्लोराइड क्लोराइड के अपोजिट है वो जाएगा। तो आपको ये वाला क्लोराइड जाएगा या ये वाला जाएगा, इन दोनों में से एक जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। तो आपको सिस आइसोमर मिलेगा। क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अमोनिया जो है ट्रांस डायरेक्टिंग इसमें सीरीज में बहुत लोअर पोजीशन पे है एज कंपेयर टू क्लोराइड। क्लोराइड जो है स्ट्रॉन्गर ट्रांस डायरेक्टिंग एजेंट है एज कंपेयर टू अमोनिया। यही रिएक्शन उल्टा कर दीजिए, ट्रांस टेट्रा अमीन लीजिए और क्लोराइड से सब्स्टिट्यूशन कीजिए, तो पहला क्लोराइड तो कहीं भी जाएगा। जो सेकंड क्लोराइड है, अब वो सेकंड अमीन है, या तो वो ये वाला अमीन जाएगा या ये वाला अमीन जाएगा जो अमोनिया के अपोजिट है। अगेन द आर्गुमेंट इज सेम कि क्लोराइड जो है स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, लेबलाइजिंग ग्रुप है, तो जो क्लोराइड के अपोजिट अमोनिया है वो जाएगा। यू विल गेट ए ट्रांस आइसोमर। तो टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट से स्टार्ट करें रिएक्शन तो सिस आइसोमर मिलेगा, और टेट्राएमीन प्लेटिनम से रिएक्शन करें तो ट्रांस आइसोमर मिलेगा। राइट, ये एक एग्जांपल है कि हाउ ट्रांस इफेक्ट operates is in action. The trans effect was recognized by Werner in 1893 and was elaborated by Chernyov, a Russian scientist, in 1926. The trans effect is very important for better understanding of the kinetic behavior of trans complexes. Now, how is हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ 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 जी, हाँ हाँ। So, so definition of the trans effect. It is possible to define this effect in number of ways. The trans effect may be defined as the labelization of the ligand trans to other in compounds with square planar structure with central complex forming cation. The rate of substitution of an atom or molecule linked to the central atom is determined by the nature of the substitution at the opposite end of the diagonal. Right? So, thus stability of the bond between metal and this ligand is little affected by the character of neighboring groups or ligands, but is greatly influenced by those more distant in the transposition on the diagonal. ये देखिए एक बात ये है कि जो ये वाला एग्जांपल देखते हैं कि चलो हाँ, इसमें ये वाला अमोनिया जा रहा है, तो ये अपना ये अमोनिया जो है, इसके अगल बगल में सिस पोजीशन पे एक और अमोनिया है, इस डायरेक्शन में भी सिस पोजीशन पे ये अमोनिया है, और एक अपोजिट डायरेक्शन पे दूरी पे है ये एंगुलर डिस्टेंस अगर देखें तो ये 180 डिग्री की दूरी पर है क्लोराइड, 90 डिग्री की दूरी पे एक अमोनिया, 90 डिग्री की दूरी पे एक और अमोनिया। तो ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला, ये कह रहा है कि जो नजदीक वाले नेबर्स हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसकी रिएक्टिविटी पे, बल्कि जो सबसे दूर है डायगोनल के दूसरे एंड पे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है इसके रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। ये कहने का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो लिविंग ग्रुप होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, उसके अगल बगल जो नियरेस्ट नेबर्स हैं एंगुलर डिस्टेंस में सिस पोजीशन पे लिगेंड्स, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, बल्कि उल्टा उसके सबसे दूर जो है ट्रांसपोजिशन पे डायगोनल के दूसरे एंड पे जो लिगेंड है वो इन्फ्लुएंस करता है उसके रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूशन को। यही कहने का मतलब है कि the stability of the bond between metal and ligand is little affected by the character of neighboring groups or ligands, but is greatly influenced by those more distant
in the trans position on the diagonal of this square. So trans directing series might depend upon the metal complex and also on the incoming group. तो ये पहले भी मैंने बोला कि सबस्ट्रेट पे भी ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज जो है उस पे भी डिपेंड कर सकता है. द लिगेंड लाइंग एट द हायर एंड ऑफ द सीरीज पोजेस. फिर इसको थोड़ा मतलब स्टडी करा गया भाई ये लिगेंड्स टॉप पोजीशन पे इनकी क्या खासियत है. जो टॉप पोजीशन पे है मैं दोबारा दिखाऊं तो टॉप पोजीशन पे ये लिगेंड्स जो है साइनाइड, कार्बोनाइल, इथिलीन, PR3, these are the ligands which have vacant empty pi star orbitals or pi orbitals to form the pi bond with the metal back through back donation. तो ये pi bonding बना सकते हैं. The ligands lying at the high ends of the series possess vacant pi or pi star orbitals that may accept electrons from the metal orbitals to form a metal ligand pi bond, which may be a d pi bond or a p pi bond. Therefore, these ligands are called pi bonding ligands. It is of the interest to note that kinetically a factor of 10 raised power 6 or more in the rate is found between a complex containing a good trans-levelizing ligand and one with a ligand that is low in the trans-directing series. इतना difference आ जाता है 1,000,000 times. 10 raised power 6 हो गया 10 लाख. The trans-directing series, also called the trans-effect series, has proved useful in rationalizing the known synthetic procedures साइज कर सकते हैं हम. जो ऑलरेडी रिएक्शंस हो रही है उनको रेशनलाइज करने में मदद मिली. अंडरस्टैंड सिंथेटिक प्रोसीजर्स को ये अंडरस्टैंड करने में काफी मदद मिली ट्रांसक्रिप्ट से. ये देखिए अब एग्जांपल्स कुछ ट्रांस इफेक्ट की. ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि क्लोराइड टेट्राएमीन है. पहला क्लोराइड कहीं भी जाएगा, अगला वाला ट्रांस पोजीशन पे ही जाएगा, तो ट्रांस आइसोमर. अगर टेट्राक्लोराइड लेंगे तो पहले वाला कहीं भी जाएगा, अगला वाला सिस पोजीशन पे ही जाएगा, तो आपको सिस आइसोमर. अब देखिए आप दो पिरिडीन है और दो अमोनिया है, लेकिन दोनों ट्रांस पोजीशंस पे. और रिमेंबर पिरिडीन ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में ऊपर है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अमोनिया. तो पहला क्लोराइड ये पिरिडीन ये ट्रांस ये हो गया, डिस्प्लेस हो गया. तो पहला क्लोराइड पिरिडीन और अमोनिया के बीच में पिरिडीन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, तो वो सब्स्टिट्यूट हो गया. तो दूसरा क्लोराइड जो है, अब देखिए पिरिडीन स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अमोनिया इन ट्रांस डायरेक्टिंग. तो कायदे से यही क्लोराइड दोबारा सब्स्टिट्यूट होगा, तो वो नया प्रोडक्ट नहीं होगा, वो तो सेम रिएक्टेंट आ जाएगा. तो अब क्योंकि क्लोराइड उससे थोड़ा सा कम है ये ट्रांस डायरेक्टिंग में पिरिडीन से, लेकिन अमोनिया से तो बेटर है. अमोनिया इन तीनों में वीकर है. तो नेक्स्ट स्टेप क्लोराइड और पिरिडीन में, एक सेकेंड, क्लोराइड और अमीन में क्लोराइड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू पिरिडीन. राइट, देखिए यहाँ पे क्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्गर, फिर पिरिडीन और फिर अमोनिया उससे भी वीकर. तो सेकेंड स्टेप में ये पिरिडीन जाएगा एंड यू गेट द ट्रांस आइसोमर, ट्रांस डाइक्लोरो डाइअमीन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स. तो अगर यही कॉम्प्लेक्स दोबारा ले रहे हैं, अमीन और अमीन, पिरिडीन और पिरिडीन, क्लोराइड, हाँ ये तो ये सेम है, मैंने गलत तो नहीं लिखा. पिरिडीन अमीन और अमीन मैंने गलत लिखा, नहीं सेम कंपाउंड में. सपोज अमोनिया डिस्प्लेस हुआ, पिरिडीन नहीं, पहले गो में. तो पिरिडीन नहीं, ये गलत लिखा है, ये दिस इज रॉन्ग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. This is cis isomer with respect to pyridine and ammonia. क्लोराइड से सब्स्टिट्यूशन करिए पहले, तो pyridine गया, ये कंपाउंड बना. नाउ देयर इज, अब ट्रांस इफेक्ट ऑपरेट करेगा कि इन सभी में क्लोराइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ट्रांस डायरेक्टिंग एजेंट, तो नया क्लोराइड यहाँ जाएगा एंड इट गोज हियर. पिरिडीन की
हाँ। पिरिडीन पिरिडीन कैसे किया सर? यहाँ पे तो अमोनिया जाना चाहिए था ना, पिरिडीन का तो नहीं ज्यादा नहीं ट्रांस है। नहीं नहीं नहीं, ट्रांस इफेक्ट अदर चीज है और रिएक्टिविटी अदर है। ट्रांस इम्पैक्ट का मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स को रिएक्टिव बना रहा है किसी सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अमोनिया ये पहली गो में कहीं भी रिएक्शन हो सकती है। इसमें ज्यादा फर्क इतना नहीं होगा कि अमोनिया और पिरिडीन जो है आस पास ही है, अगल बगल में है। पिरिडीन और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में से कोई सा जा सकता है। तो एक बार क्लोराइड आ गया तो देन देयर इज ह्यूज डिफरेंस। देन क्लोराइड इज मच बेटर, लिविंग ग्रुप भी है और वो ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, दोनों चीजें उसमें है। वो लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है। कई बार क्लोराइड ही चला जाता है, लेकिन क्लोराइड अगर वापस चला जाएगा तो फिर प्रोडक्ट यहाँ पे सेम बनेगा, राइट। तो इसलिए वो अमोनिया को डिस्प्लेस कराता है, बिकॉज क्लोराइड इन तीनों में से सबसे बेटर ट्रांस डायरेक्टिंग एजेंट है। तो दूसरी रिएक्शन में पिरिडीन पिरिडीन और अमोनिया, अब देखिए इसमें अमोनिया डिस्प्लेस कराया है। दोनों ऑप्शन है, अमोनिया डिस्प्लेस कराया है। तो एक बार अमोनिया डिस्प्लेस हुआ, क्लोराइड आ गया, फिर नेक्स्ट क्लोराइड जो है, अब दोबारा अमोनिया और पिरिडीन में दोनों ये मतलब सबसे ज्यादा क्लोराइड इन तीनों में ट्रांस डायरेक्टिंग एजेंट पावरफुल है। तो ऑब्वियसली ये इस क्लोराइड को इस पिरिडीन को किक आउट कराएगा और ट्रांस आइसोमर बनेगा। और ये रिएक्शन देखिए, ये ट्रांस कंपाउंड है, पिरिडीन है, ये प्योरली ट्रांस, ये अपना क्लोराइड जा रहा है, ये तो ठीक है, पिरिडीन आ रहा है, ये ट्रांस इन्फ्लुएंस क्लोराइड का ज्यादा है तो पिरिडीन जा रहा है। दोबारा पिरिडीन आ रहा है, तो अब पिरिडीन और अमोनिया में पिरिडीन और अमोनिया, अब क्लोराइड सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर क्लोराइड ही अपना इन्फ्लुएंस ऑपरेट करे तो दोबारा प्रोडक्ट सेम ही आएगा, नया कुछ चीज बनेगा नहीं। तो अगर उसके बाद पिरिडीन है तो पिरिडीन ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे नया पिरिडीन आएगा तो आपको ट्रांस आइसोमर मिलेगा। लास्ट वाली रिएक्शन में दो क्लोराइड सिस पोजीशन पे है, फिर अमोनिया है, पिरिडीन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोराइड ये जो अपना यहाँ पे क्लोराइड को डिस्प्लेस कराया है बिकॉज इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। अदरवाइज अगर ट्रांस इफेक्ट को ऑपरेट कराया जाए तो अमोनिया को चले जाना चाहिए, देन इट विल गिव पिरिडीन हियर, राइट। तो ये भी हो सकता है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीजें ऑपरेट करती है। So, by comparing a large number of reaction rates, the trans-directing series can be set up. This is Gray and Langford employed following reaction to develop the trans series. ये L और L dash लिया, X और X लिया, Y dash लिया, X नेगेटिव गया, दिस इज Y यहाँ पे आ गया, X यहाँ पे आ गया। अगर L ज्यादा पावरफुल है तो ये वाली रिएक्शन होगी, Y यहाँ आएगा। अगर L डैश ज्यादा पावरफुल है तो Y यहाँ जाएगा। मतलब फिर ये कॉम्पाउंड बनेगा। दे ऑब्जर्व फॉलोइंग डायरेक्ट ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, ये वही सीरीज है, नथिंग न्यू। खत्म हो गया। So that is the operational part of the trans effect. Now, in the next lecture, we will study what are the reasons, why do reactions, these trans, what are the theories behind the trans effect? How can we explain this behavior of these ligands like this? So why is the levelizing effect so strong that reaction is so fast when a particular trans directing ligand is at the trans position, right? तो एक बात ये भी दिमाग में रखनी चाहिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हार्ड एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट रूल्स बहुत कम है। कई बार एक कॉम्प्लेक्स पिक्यूलियर तरीके से रिएक्ट करता है जो ट्रांस डायरेक्टिंग इम्पैक्ट को ओबे करेगा, और कई बार उसके अपोजिशन में भी चलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ये नहीं है स्मूथ प्रोसेस। हर कंपाउंड में कोई स्पेक्ट्रेटर लिगेंड चेंज करा तो रिएक्शन बिल्कुल उसके खिलाफ जाएगी जो भी रूल डेवलप किया था। ट्रांस डायरेक्टिंग रूल्स जो है, ट्रांस इन्फ्लुएंस जो है, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है। कई बार रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जो इस रूल्स को वायलेट करेंगी, प्रोडक्ट ऐसे भी बनेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट इज नॉट द ओनली इन्फ्लुएंस। तो कई बार जैसे आदमी के बिहेवियर में कोई आदमी बहुत स्वीट कई बार ये बिहेव करता है और कई बार वही आदमी जाहिल की तरह बिहेव करता है, तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या परेशानियां होती है और कैसे उसका बिहेवियर जो है
ये सिर्फ एक चीज नहीं है कि उसको कितना पढ़ा लिखा है उसी वजह से वो बिहेव करता है, उसके 10 मतलब हजारों फैक्टर्स होंगे जो उसके अल्टीमेट बिहेवियर को डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में कंट्रोल करते हैं। तो यही बात कंपाउंड्स की भी होती है, डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस में, डिफरेंट इनकमिंग ग्रुप के साथ, डिफरेंट आउट गोइंग ग्रुप के साथ, डिफरेंट स्पेक्टेटर के साथ, डिफरेंट मेटल के साथ, जो सेंटर में मेटल है प्लेटिनम अलग, बस 10 मिनट और 5 मिनट, तो डिफरेंट ये अपना मेटल के साथ, डिफरेंट ज्योमेट्री के साथ, डिफरेंट डिस्टॉर्शन के साथ, अलग अलग चीजों के वेरिएशन के साथ कंपाउंड अलग अलग तरीके से बिहेवियर करेगा। बट एज ए जनरल रूल ट्रांस इन्फ्लुएंस जहां जहां पे ऑपरेट करता है, these are the general rules that have been listed, but these are the complex will not ultimately behave always according to this rule। तो ये एक जनरल ट्रेंड है जो डेवलप जो ऑब्जर्व किया गया है एक्सपेरिमेंटली। कोई सवाल है और? तो मैं अभी यही हूँ,